Hi, gentlemen, how are you? Fine, and you? I'm well. Where do you come from? Very well. From Europe. Which country? Italy. Italiano. Come Italiano. stai? ज़माने में 1974 तक, कदीम तो नहीं बल्कि 74 तक यहाँ दो कदीम किले हैं। इस किले का नाम किला बल्तित है और इसके रेडियो कार्बन डेटिंग टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसको 800 साल हो गए। ये किला एक दौर में नहीं बना है, बहुत सारे हुक्मरान गुजरे हैं, उन्होंने इसमें इजाफे किए हैं। 1945 में इसको खाली किया गया था। यहाँ के हुक्मरान अपने नए महल चले थे और अभी हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान ने इसकी मरम्मत करवाई है और पाकिस्तान के साबिक सदर फारूक अहमद लगारी साहब इसकी जितनी भी हमारे टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तानी या गैर मुल्की, आप जो टिकट लेते हैं इसका ये वाहिद ज़रिया मदनी है। शुक्रिया। ओके दी माउंटेन किंगडम until 1974. This fort was not constructed in one time. Many additions were made here, and this building was used until 1945. Now this has been restored by His Highness Prince Karim Aga Khan between 1990s and 96. And the owner of the building, Mir Ghazanfar, has donated this fort to the public trust. President of Pakistan, Farooq Ahmad Khan Laghari, was here in September 1996, who performed the opening ceremonies. So today, tourists, I mean domestic and foreigners, who would come to visit the fort and having tickets, that helps to maintain this building. Thanks for coming. Yake pasta, Italian pizza. He's from Italy, Mr. Thomas Tranchini. He's like Marco Polo. Okay. Royal kitchen. A bit taller. A bit taller and very thin. So no problem for home hire. से निकालने के आसान अच्छा वैसे वो जो अल्तेज वाला उस पे गाइड ने बताया था कि वो 8.0 तक का हो होगा। सकता है कोई रिपोर्ट पड़ी, हमारे पास इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है क्योंकि हम वैसे ब्लफ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मोजिस में हमारा आप पीछे चले, आपसे दरख्वास्त है कि बताओ hall. In case during the bad weather like a rainy day or a hot sunny day, the Amir and his colleagues will be assembling here. यहाँ बैठ जाते थे ना, और यहाँ we have old guns, muskets. These are the old guns which are called muskets. इनको muskets कहते हैं, हम उर्सी कहते हैं। इसको आप जरा छूते हैं ना तो इससे शोल और तफ है। ये फ्लिंट लॉक नहीं, फ्लिंट लॉक की बात में इसको मस्जिद कहते हैं। ये बहुत पुरानी and his son is Mir Ghazanfar, who is still living. He actually handed this building to the public trust, and he has 3 children, and she is the wife of Mir Ghazanfar, Rani Sahiba, and they have a house in Islamabad. They go down to the Islamabad in winters and then they return in summers to Hunza. So they have a business in Hunza called Darbar Hotel, you might notice it. And they also have different offices. Salim is the eldest son of Mir Ghazanfar. And we have many swords. These are the battle shields and swords. ये पुराने ज़माने का असला है, असलहा. This is real. Weapons, ना बेटा, real weapons. Let's stay ethical, okay? And here we have a head of a Marco Polo ship. Bedroom. China in old days with Hunza stage. The summer bedroom.
Hello, Thomas Frankie. This is the summer bedroom. Fantastic. Fantastic. Okay. और ये कारपेट And this is the replica of the carpet. ये उसका नकल है। आपने कोई रेनोवेशन किया है? कोई ये renovation भी की है। बस मतलब कुछ ऐसे बाकी as it is है। As it is. ये छत इधर आओ, Okay, जी, next room, summer balcony, please. हरम हरम इधर आओ। इंग्रेज दौर में लगी है, तो आप करीब आ जाएं प्लीज, थोड़े करीब आ जाएं। यहाँ पे कुर्सी है, टेलीफोन है, सोफे हैं। ये अंग्रेज दौर से है। मैंने आपको बताया था अंग्रेज दौर में इसमें पट्टी आई है, शीशे की खिड़कियां। ये समर बालकनी है। अभी चलते हैं जी विंटर बेडरूम में। ये दोनों तरफ इसमें ड्राई फ्रूट, खुबानियाँ, शहतूत, अखरोट वगैरह रखी जाती थी। ये उनका छत है, छत पे कोई भी बर्तन आप रख सकते हैं जी। शुक्रिया। ये कुरान मजीद किसके लिखे हुए हैं? यहाँ मुकामी जो हमारे उलमा हैं